Hello everyone, this is Maitri Bharadwaj and today I'm going to continue this chapter and today I will be discussing two topics. The first one is the respiratory volumes and capacities and second one is the exchange of gases, how it takes place. So let's start with this respiratory volume and capacity. I have made a chart of this so that you can understand it, you can get this topic more easily. Okay, so let's begin. First is the tidal volume. Now what is the tidal volume? See, tidal volume is actually the volume of the air which is inspired or expired during the normal respiration. Uh, this column that you see is actually the time of a normal respiration. Okay, this above and this downward portion, this denotes these two blocks, they denote the forced one, when the person forces the inspiration or expiration. Okay, so tidal volume is the amount of the air, the volume of the air which is inspired or expired during the normal respiration. And approximately it is 500 ml. Means a healthy person can expire or inspire about, if it is 50 ml. Okay, so it can expire, means the person can expire about 6,000 to 8,000 ml of air per minute in 60 seconds, because on an average we know that human the human can breathe about 12 to 16 times in a minute. So by that calculation we get to know that for a minute and for a healthy person the tidal volume will be about 6,000 to 8,000 ml per minute. Okay, the next one is expiratory reserve volume. Now, expiratory reserve volume is the additional volume that a person can inspire forcefully after a forceful inspiration. ठीक है, इंस्पायरेटरी मीन्स जो इंस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, वो एडिशनल वॉल्यूम जो एक पर्सन इंस्पायर करेगा जब वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहा हो. अब जब फोर्सफुली सांस लोगे, ठीक है, तो वो जो एडिशनल वॉल्यूम है जो आप इंस्पायर करोगे एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, उसको कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, ये ऊपर वाला पोर्शन, दिस वन, ये जो पूरा है इतना यहाँ तक, ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ द एयर that a person can expire after, means by forceful expiration. इतना, this portion is showing your sorry, this one वो रेसिडुअल का है, this one blue colored expiratory reserve volume. And this inspiratory reserve volume, okay, this inspiratory reserve volume is about 2,500 ml to 3,000 ml. Similarly, this expiratory reserve volume, this one is about 1,000 to 1,100 ml. Okay, then we have a residual volume. Now this residual volume, this one, this portion, is the volume of the air that remains in the lungs even after a forceful expiration. And this is about 1,100 to 1,200 ml. Okay, so tidal वो जो normally है, अगर फोर्सफुल करोगे तो वो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है जो इंस्पायर करोगे वो हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन सिमिलरली आप जितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करोगे, दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर that is expired forcefully at the time of expiration will be your expiratory reserve volume. Now after this forceful expiration, whatever amount of the air which is left, whatever amount of the air that is left in the lungs, that you call it as a residual volume. Okay, then coming to some capacities. What are these capacities? Actually, when we add few of the respiratory volumes, that is this IRV, TV, ERV or RV, then they form the capacities, like inspiratory capacity. This inspiratory capacity. What is inspiratory capacity? Is actually जब आप
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को सम अप करते हो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड दिस इंक्लूड्स द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है ये आपका 500 है और ये आपका कितना होता है, दिस इज अबाउट 2500 या 2500 टू 3000। सो इन टोटल ये आपका आ जाएगा 3000 टू 3500 ml। ओके, देन वी हैव दिस expiratory reserve expiratory capacity। expiratory capacity is what we say, जितना टाइडल वॉल्यूम है प्लस में जितना एक्सपायर हो रहा है फोर्सफुली, तो इन दोनों को मिला के आपके एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, okay, then the third one is the functional residual capacity। Now functional residual capacity is the volume of air that will remain in the lungs after the normal expiration। So normal expiration के बाद जितना भी volume रह जाएगा that is called as the functional residual capacity, और वो होगा आपका ये residual plus expiratory reserve volume। ठीक है, एंड टोटल लंग कैपेसिटी इज द जितना भी एक लंग्स, जितना भी लंग्स द लंग्स वट एवर अमाउंट ऑफ एयर इट कैन एकोमोडेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इंस्पिरेशन, खूब अच्छे से सांस ले लिया उसके बाद जितना भी एयर उसमें आ सकता था उसको कह देंगे टोटल लंग कैपेसिटी। उसमें होगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब रेसिडुअल, then expiratory reserve volume, tidal means overall total, या फिर आप कहो vital capacity plus residual volume। vital capacity में residual नहीं आता है, उसके अलावा जितना भी है वो vital capacity, इतना पूरा आपका vital capacity फॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटीज का था। ठीक, टाइडल वॉल्यूम हुआ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पे था। Then we have, this was about the residual volume, inspiratory reserve capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity, and this total lung capacity. Then we have exchange of gases. We all know the main site for the exchange of the gases is alveoli। ठीक है, alveoli में होगा, from that alveoli blood में हो गया। ठीक है, वहाँ alveoli से blood में चला गया। Now from this blood जो नेक्स्ट वही होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट विल बी बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। ठीक है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन, राइट, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। नाउ व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया फॉर द सिंपल डिफ्यूजन, क्या क्या चाहिए हमें? फर्स्ट इज द प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, मींस देयर शुड बी अ डिफरेंस। ठीक है, सो दैट द एयर, द ब्लड, द एयर कैन मूव फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल। ठीक है, then solubility of gases, solubility of gases, we all know that carbon dioxide is more soluble in comparison to the O2, it is about 20 to 25 times। then thickness of the membrane, it should be in mm, बिल्कुल thin होना चाहिए। then partial pressure, what is partial pressure? Partial pressure is the pressure of a particular gas in a mixture of gases। ठीक है, and we denote partial pressure of this P of the oxygen by PO2 and the carbon dioxide by PCO2। Till now, this much is enough for you, and the rest of the things I will be dealing in the next video. Thank you for watching the video till now. Thank you so much.